Khan from News Movements Network welcomes you in News Movement English. National capital Delhi opened on Monday after students of classes 10th and 12th outside containment zones after remaining shut for over 10 months following the outbreak of coronavirus. Several states have already opened schools for some of the classes with restrictions after reporting a fall in coronavirus cases like Tripura, Kerala and others. The Delhi state government decided to reopen schools in the view of the upcoming examinations of Central Board of Secondary Education. This is the first time that the Delhi government has allowed the opening of schools since 19th March 2020, when educational institutions were shut down to contain the spread of COVID-19. School had switched to virtual classrooms following the coronavirus outbreak to ensure that there is no disruption in the education of children, and many continue to do so. On the other hand, All Bengal Teachers Association has also demanded to open schools in West Bengal following the COVID-19 instructions. District Secretary Amit Ghosh of Paschim Bardhaman said that till now there is no official information to open schools. Schools should be open starting from higher to lower classes, following health instructions of COVID-19. सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ. मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7 to 12 स्टूडेंट्स. गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप. दुर्गापुर सेंटर. फोन नंबर 9434822278. Welcome back to our channel. In Chittaranjan, a young man was shot dead in the evening. Chittaranjan. The shots were fired at the corner of Kasturba Gandhi Hospital in Chittaranjan around 8:30 p.m. A group of miscreants came and shot a young man dead. The source said that the deceased was identified as Rahul Ram alias Alua, 26, a resident of Ambedkar Nagar area of Mihijam police station. He was also the president of Jamtara District Youth Congress. क्या नाम है? राहुल. वो तो क्या हुआ? क्या कोई क्या पता नहीं हमको ये सब. इनको कैसे जब बच्चा तो अभी हॉस्पिटल में आए आप? यहीं पर क्या गोली लगा है क्या? गोली मारती है बोलता है. आप उसका आप कौन लगते हैं? हम उसका पापा. हमको तो खबर दिया. हम घर में बैठे सोते हुए. फिर उसको जाने वाला थोड़ा पसंद पैसा बाकी है. पैसा लाना चल देना सुनिए. এইসব কেসে কি হয় গ্যাদারিংটা বেশি হয় যে শুনবে সেই আসবে Newly nominated secretary and block president has been honored in the premises of Midtown Non-Executive Club in Burnpur. Harjeet Singh, working president of Paschim Bardhaman, honored Mr. Prem Narayan Singh, block president of Hirapur Anchalik Congress, and Mukhtar Singh, secretary of Paschim Bardhaman. Dignitaries present were Devesh Chakraborty, president of Paschim Bardhaman, Ajay Roy, Vijay Singh, Mahesh Agarwal, Kamal Bose, Sonu Singh. Ektamal Chakraborty was of the view that Congress and left joint fight would bring good results in assembly election. BJP will surely not come in power as public of West Bengal are more aware about their rights and outcome of BJP government in power at center. Purulia. Honorable Mamata Banerjee held a procession with 500 women party workers in her area, calling for a large gathering of people to make the Purulia Hathmura rally a success.
सती जाके ममता बनर्जी आवाज के खद्दो सती जाके ममता बनर्जी आवाज के जिंदाबाद खद्दो सती जाके ममता बनर्जी जिंदाबाद सबूत चले जाके ममता। आप देखे होंगे ये सोनार बंगला को कुछ भाजपा के दलाल जो बड़ा माथा का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पश्चिम बंगाल को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक मंच के माध्यम से मैं एक बात बता दूं, वो जो बड़ा माथा जो दिल्ली से बंगाल को अशांत करने के लिए भेजा गया है, एक बात बता दूं, ये बंगाल की धरती, बंगाल की सैन्य ममता बनर्जी जी की धरती है। आप जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये सपना देखने छोड़ दीजिए। आप देखे होंगे कि दिल्ली में मैं एक दिन टीवी देख रहा था, कॉर्पोरेट घराने के बहुत बड़े उद्योगपति अंबानी परिवार के नाती को देखने के लिए हमारा देश का प्रधानमंत्री हॉस्पिटल गया। हमें तो ऐसा लगता था कि मैं फांसी ले लूं। आज हमारा किसान जो हमें अनाज देती है, जो हमें भूखा पेट मरने नहीं देती है, 50 से बेसी किसान अब तक आंदोलन करते हुए शहीद हो गए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा देश में ऐसा भी प्रधानमंत्री है। अफसोस होता है कि आपके पास एक किसान के लिए वक्त नहीं है, एक कॉर्पोरेट घराना वाले के लिए लोग हैं। तो आप गरीब जनता, आप गरीब मजदूर, आप गरीब किसान भी समझ सकते हैं कि आपका रहनुमा अगर एकमात्र है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। आप देखे होंगे टीवी में एक प्रचार चल रहा है, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। आज बीजेपी पार्टी, भाजपा पार्टी वॉशिंग पाउडर निर्मा बन गई है। जो लोग जो पार्टी से छोड़कर वॉशिंग पाउडर में जाकर साफ हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। जैसे में आप लोगों ने देखा होगा कि शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, इन लोग पर ईडी का जांच था, लेकिन जांच के बाद इन लोगों ने बीजेपी का जिस दिन दामन थामा, इन लोगों का वॉशिंग पाउडर निर्मा से साफ करके गंगा जल की तरह पवित्र कर दिया। সবাই যে আছে বাইরে যে পাবলিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ। বাংলা में बोले ना हिंदी में बोले? बांग्ला में बोलते हैं पहले, उसका बाद हिंदी में। को एक चीज बोलना चाहता हूँ, अभी जो शपथ हुआ बहुत बढ़िया लगा। ये शपथ इसी तरह रहना चाहिए। हमारा विधान उपाध्याय यहाँ से जीत ही रहे हैं, दीदी भी गवर्नमेंट बना रही है। ये तो सबसे बड़ा सत्य है 2021 का, इसको कोई नहीं हिला सकता है। ठीक है, अब बाहर से आके बीजेपी बड़ा भाषण देके ये हम ये कर दिए वो कर दिए, कि किसान लोग वहां पर अभी भी बैठा हुआ है दिल्ली में, उसको नहीं देख के यहाँ पर आके देख रहा किसान लोग से चावल लेके उन लोगों को ही चावल खिलाएगा। तो सोचिए कितना वो अपने आप को गिरा के रखा है। वहां पर किसान 2 डिग्री सेल्सियस पे, 1 डिग्री सेल्सियस में किसान बैठा हुआ है, और हमारा प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। आप लोग को सोचने का जरूरत है। ये छोटा चीज आज जो दीदी दी है, हमको बीजेपी से कोई आलोचना नहीं है, कोई नहीं है। हम जो दीदी मेरा दी है, जो की है,
बस उसी के बारे में हम बोलेंगे। दीदी जो दी है आज स्वास्थ्य साथी कार्ड, जो राशन दे रही है, आज मोदी का राशन इस महीने से बंद हो गया, हम लोग का राशन आजीवन फ्री है। तो जो दे रही है उसका बारे में सोचिए, जो हम लोग का जननी है। और यहाँ विधान उपाध्याय shop in Asansol, which is famous for its uniqueness. This shop is 100 years old. They have some unique products. They have the variety of khakra, which you don't find in Asansol. They have delicious product. The address of opposite SBI Bank, Simran Roy Road, Asansol. The pin code is 713301. And you have also call on the number 0341 2305 and another mobile number is 9547356154. And they have the unique tasty products: meethi khakra, masala khakra, sadda khakra, Manchurian khakra, cheese khakra, Maggi khakra, chaat masala khakra, mithia khakra, banana chips. Welcome back to our channel. Purulia, November 18th. Chief Minister Mamata Banerjee is arriving on Shopper on Monday night to address a public meeting at 1 p.m. on Thursday at Hatmuda High School football ground regarding the upcoming assembly elections. It may be noted that for the last several years, the Trimool district leadership has been engaged in propaganda with great readiness to make this public meeting of the Chief Minister a success before the forthcoming assembly elections. Meanwhile, in the view of Chief Minister's public meeting, heavy security arrangements have been made around the meeting place. A large number of police from different police stations of the district have been deployed there. On the other hand, in view of Chief Minister's public meeting, special measures have been taken by the administration and district Trimool Congress leadership to prevent corona infection. From police and administrative officers entering the assembly to Trimool leadership and journalists have also been corona investigated. Purulia District Trimool Congress President Guru Pado Tudu said that it was reported that MP Shatabdi Rai was also with him in the Chief Minister's public meeting. He said that after holding a public meeting, there is news that the Chief Minister will stay at Purulia Circuit House and will attend administrative meeting in Purulia on Wednesday before leaving for Kolkata. She will also inaugurate several projects for meeting hall at Purulia Belguma Police Line on Wednesday afternoon. আমি পরিষ্কার কথা বলছি, ব্যারিকেডটা না করলে কি হবে? ঠেলাঠেলি পাঠাতে আমি আমার নামে আপনারা বলুন যে সিএম কে জানান যে এই নিয়ে মানে আমাদের আপত্তি আছে। আমি পরিষ্কার বলে দিলাম, আমি একটা মানে বেশি কথা মানুষ নই। সাহেব আমি এটা আর শুনছি না। আপনার কি লোকগুলোকে উৎসাহিত এই যে মমতা দিদি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এই পুরুলিয়া জেলাতে আসছেন ঘোরাতে, আমরা ভীষণ উৎসাহিত। এবং আমাদের এখানে যে লেডিসদের সংগঠন এবং জেন্টসদেরও সংগঠন আছে, আমরা সবাই যাব মমতা দিদিকে দেখতে। আমরা চাই আমাদের এই যে 2021-এ মমতা দিদি আবার ফিরে আসুন। এবং আমরা ভীষণ খুশি কি আমরা দিদিকে সামনে থেকে দেখব এবং দিদি আমাদের সবার এত সংগঠন, এত লেডিসের সংগঠন, দিদিও দেখবে কি আমরা দিদির সাথে আছি। আমরা চাই দিদি আমাদের এগিয়ে চলুক এবং আমরা দিদির সঙ্গে সবসময় থাকবো এবং দিদির সঙ্গে আমরা সবসময় থাকবো। 2021-এ দিদি জিতুক এবং এটাই আমাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা এবং আমরা দিদির পিছনে সবসময় থাকবো। আমাদের যে এত লেডিস আজ আমরা আছি, সবাই দিদির সবসময় আমরা দিদির পাশে থাকবো এবং দিদির পাশে থাকবো এবং যারা যাচ্ছে যাক, আমাদের কোনো যায় আসে না। এবং 2021-এ আমরা দিদিকেই চাই, সবাই চাই আমরা দিদিকে, সবাই মমতা দিদি আমাদের 2021-এ আমরা মমতা দিদিকেই চাই। Two people were arrested in Papudhar shop robbery. People have arrested two accused in a robbery that took place late night in a liquor shop in front of Shashti Narayan Gorai Bhavan on SV Gorai Road in Asansol, South Police Station area.
The arrested accused include Rohan Rajak and Pratap Das of Ismail area. Both have been channeled in court and the police have applied for remand. Money and liquor have also been recovered from them. It is noteworthy that the criminals broke the shutters and looted. The liquor store is owned by V.K. Dhal, that is Pappu, president of West Burdwan District Chamber of Commerce. After the information, the police led by police station in charge Abhijit Chatterjee came for investigation. The criminals also looted the hard disk of the CCTV camera, but the police was investigating by gathering the footage from the CCTV of the nearby bank branch and ATM. The criminals looted 1,30,000 in cash and liquor worth lakhs of rupees. Andal. A function was organized at Ukra Community Building to hand over letters of commendation to Rural Medical Practitioners Association. In this ceremony, all the rural doctors were given letters of commendation for good performance in the corona period. Everyone was supposed to get those from the hands of Malai Ghatak, Minister of State for Law and Justice, but the minister could not come for some reason. District President of Rural Medicine Practitioners Association Ajit Mishra, District Secretary Shambhu Yadav, Ashraf Ali, State Secretary Ashok Yadav and other members were present on the occasion. On this occasion, letters of appreciation were given to 250 members. Salanpur. Locals of Shabalpur Ashram village of Salanpur protested by blocking Jabalpur Road on Monday morning. Ravi Samanta, a resident of Ward number 16 of Asansol Municipal Corporation, said that the area gets submerged during rains. Due to lack of roads and drains, water seeps into the houses in the area. Living in the area has become difficult. He said that he had spoken to the administration before, but there was no hearing. There is no drainage system in the area. MLA of Asansol Municipal Corporation was informed, but they made no solution. The road was blocked for the second time due to compulsion. After hearing about the road jam, former Deputy Mayor of Asansol Municipal Corporation, Corporation Administrator Board Member Tabassumara reached the spot and assured the locals that roads and drains would be constructed in the area within a month before the announcement of election day. After the assurance of Tabassumara, the locals removed the road jam. Andal. Tensions have risen in Andal police station area after the head of an idol was found broken at the Hanuman temple near Kajora railway station. On Monday morning, the temple staff tried to open the temple for cleaning. They were shocked to see the view inside. Upon receiving this news, a large crowd gathered at the scene. The incident was reported to Andal police station. Police reached the spot and brought the situation under control. Members of Joy Shri Ram Seva Dal said that someone had done this disgusting thing to disrupt the peace in the area. Attempts to hurt the trust of the people will not be accepted. On the other hand, Malai Chakrabarti, a member of Kajora Gram Panchayat, said such incidents in the area were reprehensible. Some people want to break the peace system by causing such an incident before the election process starts in Bengal. We are asking the police to take action in this regard. Bharatiya Janata Party's banquet in Salanpur block head of 2021 polls. Bharatiya Janata Party's Barabani Mandal 4 in Salanpur block today organized a picnic and to unite all party workers in the run up to 2021 assembly polls. On this day, this picnic was organized in the field adjacent to Sidabari CISF camp. On behalf of Barabani Mandal 4 of the Bharatiya Janata Party, Gopal Roy, President of Barabani Mandal 4 said, "It was through the banishment that we began 2021 assembly vote. In the 2021 assembly vote, we will be the lotus flower of the Barabani assembly." On this day, he was present in the main form on this forest feast. Utpal Layak, Manoj Tiwari, Badal Paul, Bishwajit Tiwari, Baban Mandal, Gopi Goraya and many more were present. 2021 যে বিধানসভা ভোট আছে সেই বিধানসভা ভোটের প্রাককালে আমাদের বারাবণী বিধানসভার সমস্ত কর্মীদের সংগঠিত ও উৎসাহী করার জন্য একটা বনভোজের আয়োজন করেছি এবং বনভোজের থেকে আমরা ভোটের প্রাককালে ভোটের ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছি। এক জায়গায় দেখুন, তৃণমূল বিরোধী পার্টিরা সবসময় চাইবে যে আমরা জিতি, আমাদেরও ইচ্ছা আমরা জিতব। যা হাওয়া, মোদির যা হাওয়া এবং মমতা ব্যানার্জির যে নোংরামি তা মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সে আমরা দাবিদার এবছর আমাদের বারাবণী বিধানসভা তথা পশ্চিমবঙ্গে আমরা বিজেপি আসবে।
এমএলএ ক্যান্ডিডেট। দেখুন, আমরা বিজেপির সৈনিক, আমাদের ক্যান্ডিডেট যেই হোক আমাদের তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা বিজেপিকে জেতানোর লক্ষ্যে নেমেছি, বিজেপিকে আমরা জেতাবো, তাতে যে ক্যান্ডিডেটই হোক না কেন। পদ্মফুল আমরা ফোটাবই বারামণি তথা পশ্চিমবঙ্গে। এই নিয়ে আপনাদের একটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দেখুন, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লোকে বলছে, আমরা নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মনে করি না। আজকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সবাই বলছে ক্যান্ডিডেটের জন্য, কোনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব না। আমি তো একটা কথাই বললাম, যেই ক্যান্ডিডেট হোক আমরা জেতাবই। এবং Distribution of blankets among 300 poor people through regional Trinamool Congress staff meeting at Kalyaneshwari. Elections ahead. So, a staff meeting was held with the workers and leaders to strengthen the organization in 2 booths of Kalyaneshwari area. Besides, blankets were distributed among about 300 poor people of the area through this staff meeting. ये बंगाल की धरती, बंगाल की सैन्य ममता बनर्जी की धरती है। आप जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये सपना देखने छोड़ दीजिए। आप देखे होंगे कि दिल्ली में मैं एक दिन टीवी देख रहा था, कॉर्पोरेट घराने के बहुत बड़े उद्योगपति अंबानी परिवार के नाती को देखने के लिए हमारा देश का प्रधानमंत्री हॉस्पिटल गया। हमें तो ऐसा लगता था कि मैं फांसी ले लूं। आज हमारा किसान जो हमें अनाज देती है, जो हमें भूखा पेट मरने नहीं देती है, 50 से बेसी किसान अब तक आंदोलन करते हुए शहीद हो गए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा देश में ऐसा भी प्रधानमंत्री है। अफसोस होता है कि आपके पास एक किसान के लिए वक्त नहीं है, एक कॉर्पोरेट घराना वाले के लिए लोग हैं, तो आप गरीब जनता, आप गरीब मजदूर, आप सारथी मरांडी, सारथी मरांडी, सारथी मरांडी होदला, सारथी मरांडी होदला, अरबित मरांडी, अरबित मरांडी, ताली से स्वागत किया जाए। रोड साइड बसंत मल्लिक, बसंत मल्लिक, अच्छा मथुर, मथुर तालियों से स्वागत किया जाए। मथुर नंदी अभी हमारे बीच जो हमारे बहुत प्रिय है भोला सिंह जी, हमारे सलामपुर के ब्लॉक, सलामपुर ब्लॉक के ही है। Jamuria fundraising campaign for the construction of the magnificent Ram Mandir in Ram Janmabhoomi has been started in Jamuria Gramin Mandal 2 on Wednesday on behalf of Rashtriya Swayamsevak, that is RSS, and Vishwa Hindu Parishad. The campaign was started from Ali Nagar of Jamuria Gramin Mandal. The check was deposited in the Ram Mandir Construction Fund of Ayodhya. Shukla Chatterjee, Nidhi Pramukh of Jamuria Gramin Mandal, said that the movement related to Ram Mandir lasted for many years and many Hindus have sacrificed their lives for the construction of Ram Mandir. On the other hand, he will go from house to house to raise. He said he'll go from house to house to raise funds for the establishment of Ramlala Temple and will appeal to everyone to cooperate. Intelligence plus character. That is the true goal of education. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel.